Yes, and that's a very important question, a critical question, because this Global Youth Peace Festival started with a dialogue between youth from India and youth from Pakistan. In the last few years, the youth from Pakistan have not been allowed to come to this conference and take part. So the USATA has done creative things like internet talk lines, but that's not as strong as face-to-face with large groups of people. So we're working against the tide right now in terms of India-Pakistan relationships. And just last week, the government of India said we're not going to continue the dialogue that we had started with the government of Pakistan and the new leadership in Pakistan. So I'm very concerned about this, and even more than the relationship between India and Pakistan is important to me. I've been since 1974, I've been working on nuclear abolition, abolish nuclear weapons. And we live right here in one of the most dangerous places in the world in terms of nuclear war. India and Pakistan each have over 100 nuclear weapons. If they start using them, that affects the whole world. Everybody's concerned that I know that knows what's going on about nuclear weapons are very concerned. So yes, I'm concerned about peace between Indians and Pakistanis. That's critical, that's basic. But the whole world is going to be affected if we don't abolish nuclear weapons and have India and Pakistan go to war. Of course, if the United States go to war with Russia and China with nuclear weapons, that's it for everything. May I add a thing? आप लोगों को जैसे पहले ध्यान होगा कि 2016 में 19 लड़कियां पाकिस्तान से पीस फेस्टिवल के लिए चंडीगढ़ आई थी. जिस दिन वो पहुंची थी उनके नेक्स्ट डे सर्जिकल स्ट्राइक्स वाला इशू क्रिएट हो गया था और दुनिया भर में सर्जिकल स्ट्राइक्स और 19 लड़कियां पाकिस्तान के चंडीगढ़ में शायद ही वो अखबार हो किसी ने ना छापा हो. ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही न्यूज़ थी और हमारे ऊपर भी इतना प्रेशर था कि इनको आज तुरंत वापस भेज दो. बादल साहब ने बॉर्डर का एरिया जो है वो अपना गाँव से लोगों को निकाल लिया था कि लड़ाई लड़ सकती है किसी वक्त भी. पर हम बजाय उनको वापस भेजने के सारा प्रेशर झेलते हुए उनको शिमला ले गए और वीरभद्र जी को पूछा उन्होंने वहाँ जो ऐसे ही जब गए तो प्रेस वाले लोग थे कि पाकिस्तानी लड़कियाँ आई हैं. तो वीरभद्र जी ने कहा कि हमारी बेटियाँ हैं, आतंकवादी हैं क्या? तो सब चुप हो गए. अच्छा खैर फिर वहाँ अच्छा शिमला घुमा के वापस लाए. पर आप लोगों की मीडिया की सपोर्ट से इतनी हाइप बनी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री खुद इन्वॉल्व हो गई. सुषमा जी ने खुद उन बच्चों से बात करी और ये कहा कि बेटियाँ साझी होती हैं. तो जो एक माहौल सर्जिकल स्ट्राइक्स के वॉर और वायलेंस और हेट्रेड का बना था, इतना अच्छा मैसेज पाकिस्तान में भी घर घर में गया और पाकिस्तान के अखबारों में भी इतनी प्रेज हुई कि एक बार तो सर्जिकल स्ट्राइक्स और एक तरफ 19 लड़कियों के लिए ये रवैया. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और बाकी सब अपना पुलिस सब ने पूरा सहयोग दिया कि उनको कहीं कोई दिक्कत ना आए. बल्कि मेरे को ध्यान है आखिरी दिन पहले उन्होंने काफ़ी शॉपिंग वगैरह कहीं पर छाप ना देना. तो वो जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे वाघा बॉर्डर से फ़ोन आने शुरू हो गए. वो कहाँ पहुँची हैं, हाले आया कितने है जी. मैं वहाँ पे हम बताते रहे यहाँ अभी जलंधर क्रॉस किया, अमृतसर क्रॉस किया. और जैसे ही आप पहुँचे ठक कोई चेकिंग नहीं, चलो चलो ये तो मेहमान है हमारे इम्पोर्टेंट VIP. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि मैक्सिको में जो तितलियों के फड़फड़ाने से है ना अमेरिका में तूफान आ जाते हैं. तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि इन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ता है. Gandhi's autobiography was named My Experiments with Truth, and I've learned a lot from Gandhi. When I started portraying Gandhi in 2002, I was very careful to be accurate and precise about what I said, making sure I do not twist or turn or hurt Gandhi's words and inspiration. Now I've learned that his truth and my truth are close. I'm not saying I'm Gandhi. I'm saying I follow the truth
as best I can. I study what's happening every day in regards to truth affecting humanity, especially nuclear weapons and the climate. So I've learned that there's ignorance everywhere. One of my favorite authors is Thomas Merton on Gandhi and nonviolence. And he indicates by his very articulate and knowledgeable words that the East, meaning Asia, has lost touch with its understanding of truth from the ages by going the way of the West, which is quantity, material, wealth, and not following wisdom. So he says, we got to bring the wisdom of the East together with the knowledge of technology of the West. We got to do that. It's not that West does not have wisdom, but the technology and the materialism overwhelm it. It's like Martin Luther King said, it's not a question of nonviolence and violence, it's a question of nonviolence and non-existence. So that's a line of thinking I have about the truth, starting with internal truth about what it means to be a human being and what it means for me to be human, and then helping society go through the same process. And it's a tug of war, huh? A tug of war. There's a lot of truth in society, in life, but it's a battle with the forces against the truth of what it means to be human and have life on planet Earth. Those are very general statements, and I could go into a lot of things about it in another setting.